Assalamualaikum, dear students. I hope you all are doing well. Today our lecture is about SPSS, Statistical Package for Social Sciences. We will discuss how you can do your data analysis in the SPSS, how you can enter data, and how you can perform certain parametric and non-parametric tests using SPSS. So, we will discuss step by step. Let's have a look. This is basically screen of SPSS. So, it's basically just like a spreadsheet where you can enter your research data. So once you open SPSS, a bar appear over here. You can simply close it. This is the overall screen of SPSS. Here you can see there are certain tabs: file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, graph utilities, extension, videos, help, etc. We'll discuss each one by one. But if you look at the bottom, there are two views. One is data view, one is variable view. So in the variable view, you defined your variable, and in data view, you add your data. Normally होता क्या है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं, लेट्स सपोज आई हैव वन रिसर्च टॉपिक, मैं चेक करना चाहती हूँ कि व्हाट आर द जेंडर डिफरेंसेस इन द सेल्फ esteem, like are male different from women in their level of self esteem. So I have to a questionnaire of self-esteem. Here I can show you this questionnaire. This is the 10-item questionnaire or scale developed by Rosenberg, which actually measuring self-esteem. To measure this research topic, I have collected data from female and from the male. So now what I will do is I will explore the difference, whether the difference exists between man and women and their level of self-esteem. So let's suppose I'm done with my research. I took a sample of 100 students or 100 male and female, or I took a sample of 50 participants. That entirely depend on the nature of my research and my desire of my research. So I'm done with that. I have data in my hand. What is the next step? So here I'm going to enter that data in the variable view. So once you calculate some scores manually, it's time taking. आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आप उस पर एक पार्टिसिपेंट का स्कोर कैलकुलेट करते हैं. It is easy somehow to calculate the scores of one participant or two participants or three participants. But what about when we have data in numbers, in hundreds or thousand numbers? So we need one shortcut or one simplest solution for that, where we can just enter data and we can obtain results in just one go. So keep in the mind my research question. I am gonna explore the gender differences and the self-esteem. Here is the SPSS sheet where we're gonna walk. Right, so let's start. Normally from where we take start. First of all, we will enter one variable name ID. What does it mean? ID basically identity number. Sometimes we collect data from 100 participants or 1000 participants. नॉर्मली होता क्या है कि किसी एक पार्टिसिपेंट का डेटा हमने अगर डिस्कार्ड कर दिया है, ऑल्दो जब आप SPSS में डेटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली आपको ये साइड बार पे नंबर दे रहा है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये 1 नंबर किसका है, ये 2 किसका है, 3 किसका है. तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने 50 लोगों से डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आपने किसी एक पार्टिसिपेंट का डेटा जो है वो डिस्कार्ड कर दिया. आप अपने याददाश्त के लिए, आप अपने इसमें रखने के लिए ज़हन में कि आपने किस पार्टिसिपेंट का डेटा डिस्कार्ड किया है, तो या किस पार्टिसिपेंट के डेटा में कोई चेंजेस किए हैं, आप उसको एक आइडेंटिटी नंबर डिफाइन कर देते हैं. तो आप देखें कि जब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम एंटर किया तो मेरे पास ये कुछ जो है अदर ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई, जिनमें पहली है न्यूमेरिक टाइप, यानी कि आपने इसमें जो डेटा एंटर करना है उसकी टाइप क्या है. Either the data in the numeric form, in the commas form, dot scientific notation है, डेट है, डॉलर है, कस्टम करेंसी है, स्ट्रिंग यानी कि वो वर्ड्स में है, तो या रेस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक्स है. मैं यहाँ पर न्यूमेरिक चूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं डेटा 1 to 3 की फॉर्म में एंटर करूँगी.
विड्थ कितनी होगी कॉलम की और कितने डेसिमल्स होंगे, लाइक मैंने अगर 1 एंटर किया है तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स होंगे। इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी देन जस्ट कीप इट 0। लेबल में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डज आईडी मीन। लेबल आपने अपने पर्सनल जो है रिकॉर्ड के लिए रखना है कि आपने अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, शॉर्ट एब्रिविएशन यूज़ की है कोई, तो आप उसको यहाँ पर लेबल में डिफाइन कर दें कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ आईडी किया है, तो रीडर कैन इजीली असेस के व्हाट डज आईडी मीन, आइडेंटिटी नंबर। यू कैन ऐड और यू कैन स्किप दिस option, so it entirely depend on your need. So I can add just simply values. Values basically means if there are some other categories under that, or I have collected data on some nominal scale, so क्योंकि SPSS is dealing with the numbers, तो मुझे उनको कोई value define करनी है, कोई values देनी है। So if you have any missing data in your scores, so here you can just define uh, a number, so the SPSS can screen out that missing data. Column is automatically over here. Alignment is by default right. Meyer is currently unknown, so I need to define the Meyer. So what happened is you can see over here SPSS give you three options. ऑल्दो आपने पढ़ा होगा या आपको आइडिया होगा कि मेजरमेंट के 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल। सो नॉमिनल में नॉर्मली वो हमारे पास डेटा आता है जिसमें नेम्स होते हैं लाइक कलर, जेंडर, एथनिसिटी, कंट्री एक्सेट्रा के जो डेटा हम ले रहे थे। ऑर्डिनल हमारा रेटिंग बेस्ड डेटा होता है। इंटरवल वो डेटा होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन, कोई स्पेसिफिक इंटरवल है लाइक टाइम ऑफ द डे है, ईयर है, आईक्यू लेवल है। सो फर्दर होता है रेशियो स्केल। सो रेशियो में जैसे एज, हाइट, वेट वगैरह ये सब रेशियो स्केल पर मेजर किए जा रहे होते हैं। बट एसपीएसएस हमें 3 दे रहा होता है, nominal, ordinal and scale. Scale basically for all the data that is assessed on the interval and ratio scale. So I will select ID as nominal. And how it is appearing in the data view, this way it is appearing in the column form. Here you enter data in the row form and you can see here it is appearing in the column form. So I will define my next variable. Let's suppose this initially we enter the demographic characteristics of the participant. Let's suppose you have collected data from me. So what is my age, what is my gender, what is my qualification, or any demographic characteristics that are related to your research or your research topic. So here we will enter, let's suppose my next question is gender. I asked about the gender of the participant. Again, the scores will be nominal. I will make it 0. I won't give it a label because I have explained it over here. So in the value section, yes, I will define now because for the gender I have data in male and female. So SPSS numeric के साथ डील कर रहा है, so 1 I will write male, तो SPSS मुझे उस तरह उसको cater करके नहीं देगा। तो I will choose a value। आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो एक फॉर्मेट होता है हम उसके लिए 01 या 12 के कोडिंग दे देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे कॉलम में 1 होगा दैट विल बी फॉर द मेल। दिस वैल्यू डजंट मीन कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सुपीरियर है, हाई है। ये सिंपली एक नंबर है जो ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंडर जो डेटा है उसमें 1 का मतलब मेल है एंड 2 का मतलब लेट्स सपोज हम 01 के बजाय हम 12 की फिलहाल देख लेते हैं। सो आई चूज 2 फॉर द फीमेल। आई एड इट। सो अब क्या होगा कि जब मैं डेटा वे में जाके डेटा एंटर करूंगी तो मैं मेल फीमेल लिखने के बजाय आई विल जस्ट राइट दिस नंबर 1 and 2। ओके, it's basically gender based data is again on the nominal scale. Now you can add other number of variables जो आपने कलेक्ट किए होंगे, जिन पर डेटा लिया होगा, जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। फैमिली सिस्टम हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, आप देखिए फैमिली सिस्टम एक बड़ी टर्म है और इसमें हम जब लिखते हैं फैमिली सिस्टम हम कंबाइन नहीं लिखते, हम उसमें स्पेस देते हैं। बट यहाँ पर जब आप डेटा एंटर करेंगे वेरिएबल व्यू में, उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो इसमें स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। लेट्स सपोज आई हैव गिवन स्पेस, आई रॉट फैमिली सिस्टम, and when I click over here it said variable name contains an illegal character. So what I'm gonna do is कि मैं उसकी कोई एब्रिविएशन यूज़ कर लूँ, लाइक मैं FS यूज़ कर लूँ और मैं लेबल्स में जाकर यहाँ पर डिफाइन कर दूँ व्हाट डज FS मीन।
अदरवाइज क्या है कि मैं यहाँ पर उसको फैमिली सिस्टम कोई मैं डैश या डॉट यूज़ करके उनको सेपरेट कर दूँ। सो अब ये देखें, अब उसने इसको इल्लीगल कैरेक्टर नहीं कहा है। तो फैमिली सिस्टम मैंने यहाँ अगेन लेबल नहीं दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ एब्रिविएशन यूज़ नहीं किया है। आई नो द डेटा इन दिस वेरिएबल इज़ ऑल अबाउट द फैमिली सिस्टम। सो आपने जिनसे भी डेटा लिया है वो कौन सी फैमिली में रह रहे हैं, आपने अगेन लाइक जस्ट एज वी give some values in the gender column, we'll also give some values. Let's suppose I give 1 to the joint family system, 2 for the nuclear family system. I will add and okay. You can also change. Let's suppose आपने अगर कोई गलती से कोई ऐड आपने उसको चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं, आपने रिमूव करना है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आप अगेन इसका जो है स्केल ऑफ मेजरमेंट डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, वो ले लिए हैं और मैंने उनको एंटर कर लिया है। तो अब मैं अपना क्वेश्चनर बेसिकली स्टार्ट करूँगी जिस क्वेश्चनर पर मैंने डेटा लिया है। सो जस्ट remember my research question that was about gender differences in the self-esteem. So I took this questionnaire developed by Rosenberg self-esteem scale. I'm supposing that I collected data from the participant on this scale. So here is the scale. There are 10 items like on the whole I'm satisfied with myself, at time I think I'm not good at all. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, आपने खुद भी डिज़ाइन किए हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने अदर वेरिएबल्स भी आपके पास होते हैं, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चनर या आपका स्केल होगा। तो उसको हमने अब कैसे एंटर करना है? सो अब मेरे पास 10 आइटम्स हैं, मैं यहाँ पर 10 आइटम्स को डिफाइन करूँगी, उनके रेटिंग स्केल बताऊँगी कि किस रेटिंग स्केल पर डेटा लिया गया है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब आप देखें कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऑथर ने बताया होगा आपको कि किसको आपने क्या नंबर देना है। ठीक है? हर स्केल की डिस्क्रिप्शन में बताया गया होता है कि आपने 1 किसको कहना है। यहाँ पर देखें बताया गया हुआ है कि स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पॉइंट है, डिसएग्री 2 पॉइंट है, एग्री 3 पॉइंट है एंड स्ट्रांगली एग्री 4 पॉइंट है। इट डज़न्ट मीन कि एक चीज़ दूसरे से हायर है, इट सिंपली मीन कि आप उसके लिए कौन-सा न्यूमेरिक डिजिट चूज़ कर रहे हैं। सो अब हमें यहाँ से आइडिया मिल गया कि स्ट्रांगली डिसएग्री जहाँ पर आएगा हम उसको 1 पॉइंट देंगे, डिसएग्री जहाँ पर आएगा हम 2 पॉइंट देंगे, एग्री जहाँ पर आएगा हम 3 पॉइंट देंगे और स्ट्रांगली एग्री जहाँ पर आएगा हम उसको 4 पॉइंट देंगे। Now this is my self-esteem scale. I will simply choose rather writing the complete word. I will simply choose SC. SE1. SE1 mean self-esteem statement number 1, question number 1 और item number 1. SE2 मैं इनकी ये चीज़ें बाद में चेंज करूँगी, लेकिन मैं पहले इसको यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। SE10 because I had 10 item in this questionnaire or 10 questions you can say or 10 statements, so मैंने इन 10 statements पर डेटा कलेक्ट किया है, so मैंने उनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर आप उनको रोज में डिफाइन कर रहे हैं, बट इन द डेटा व्यू दे विल अपीयर एज इफ द पार्टिसिपेंट 1 का डेटा, पार्टिसिपेंट 2 का डेटा, 3 का डेटा, 4 का एंड सो ऑन। जितना भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनका डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे। हम गोना मेक ऑल डेसिमल जीरो। टेबल में आप बता दें कि स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली सेल्फ स्टीम की स्टेटमेंट 1 क्या है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए या पढ़ने वाले रीडर को आइडिया हो जाए कि किस स्टेटमेंट पर ये डेटा लिया गया है। Let's suppose what I will do is simply I will copy it from here and I will paste it over here, right? So likewise I will do this for my is for all the items, ताकि इन फ्यूचर जब भी मुझे देखना हो कि मैंने किस क्वेश्चनर पर डेटा लिया था और किस आइटम या स्टेटमेंट के अगेंस्ट मैंने डेटा लिया था, तो मैं सिंपली उनको यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। You can also type over here, but the easiest way is to copy from your questionnaire and paste over here. It's a bit time taking if you have a lengthy questionnaire for the 30 items or 40 items questionnaire, but of course that's not too much difficult to do. So up now in the value section, I will define my rating scale. This is basically the rating scale. Let's suppose participant ने ये कहा कि on the whole I am satisfied with myself. So क्या उसने इस पे strongly agree कहा, disagree कहा, strongly disagree कहा। तो मैं यहाँ पर define कर दूंगी strongly disagree 1 है।
Just click on the value button. 1 is equal strongly disagree. Here you can give the space but not here. Add. What does 2 means? Disagree. So 2 value disagree. Add 3 for the agree. ये हर ऑथर ने अपने डिफरेंट आपको रेटिंग स्केल्स दिए होंगे, लेकेट स्केल कौन सा रेटिंग जो क्राइटेरिया किसको डिफाइन कर ऐड. ओके, so I will click OK. Rather adding again and again to the all, I will simply copy it. I press the shift button and drop down and simply paste over here. कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें या आप यहाँ से पेस्ट कर लें. हमने पेस्ट कर दिया. बिकॉज आई कलेक्टेड दिस डेटा ऑन द रेटिंग स्केल, all item will be on the scale. This is how you defined your variable. This is the data view where we have already defined our variable and we will enter our data. So let's suppose I have collected data from 10 participants. We will just enter 10 over here. So you might have data of 50 participants, you might have a data of 100 participants. You will enter them one by one. This is basically the manual data entry where you just collect data in person. In the next video, we will also discuss how you can convert data collected from online modes, like if you collected data through Google Form, and how you can import the data directly into the SPSS sheet. So ID, I will define number of the participants. I told you that I have collected data from the 10 participants. Sometimes you simply enter over it and you just clear it. Unless if you don't clear it, what you do is आपने इसको यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर दिया बट स्टिल द डॉट्स आर विजिबल और ये एक्टिवेट हो गया है. सो इट्स मीन देयर इज सम डेटा बट इट्स ब्लैंक. सो हम जब भी इस पर एनालिसिस रन करेंगे तो एसपीएसएस आपको शो करेगा कि आपके पास 11 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, बट यू विल सी कि आपके पास 11 तो नहीं था, आपके पास 10 पार्टिसिपेंट का डेटा था. तो अब आपको क्या करना चाहिए? देन यू विल सिंपली क्लियर इट. सो जेंडर मैंने कहा था कि मैंने मेल और फीमेल दो तरह के लोग लिए हैं. सो मैंने इनको 1 एंड 2 की कैटेगरी डिफाइन की थी और हमने देखा था यहाँ पर कि 1 हमने मेल के लिए कहा था और 2 हमने फीमेल के लिए कहा था. So let's suppose my participant 1 is male, so I will give it 1. My participant 2 is female, so I will give 2. So I next my variable is family system. So मैंने अपने participant आप इस तरह भी enter कर सकते हैं, but once you are entering data manually आप पहले participant 1 का questionnaire लेंगे और 1 by 1 उसकी डिटेल डालेंगे. तो ये तो मैं जस्ट अपनी ईज के लिए एक ही बार में डाल रही हूँ बिकॉज इट्स अ सूडो डेटा आई एम अज्यूमिंग. लेकिन जब आपके पास लेट्स सपोज 10 लोगों के डेटा आ चुका है तो आप पहले पार्टिसिपेंट 1 का आईडी देंगे, उसकी जेंडर बताएंगे. पार्टिसिपेंट 1 बिलोंग्स टू द जॉइंट फैमिली सिस्टम. नाउ पार्टिसिपेंट 1 का स्कोर इन स्टेटमेंट्स पर क्या था? ये मेरा रेटिंग स्केल था. इसके अकॉर्डिंग उसने लेट्स सपोज इस आइटम पर एग्री किया, डिसएग्री किया, स्ट्रांगली एग्री किया, तो हम वो एंटर कर लेंगे. पार्टिसिपेंट 1 का डेटा सक्सेसफुली एंटर हो गया है. देन आप पार्टिसिपेंट 2 का डेटा एंटर करेंगे. पार्टिसिपेंट 2 की इंफॉर्मेशन, वो कौन से फैमिली सिस्टम से बिलोंग कर रहा है और उसके सेल्फ एस्टीम पर स्कोर क्या है. लाइकवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. So we are done with the data entry of the 10 participants. You will enter one by one of each participant. सो अपने रिकॉर्ड के लिए आपने इसको डिफाइन भी कर लिया और आप अपने जो क्वेश्चनर है हार्ड फॉर्म में जो स्केल आपके पास था आप उस पर नंबर भी दे सकते हैं, पार्टिसिपेंट 1 2 3 4 5, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉर्ड में से जब भी वो क्वेश्चनर पिकअप करना हो और उसमें जो भी देखना हो इन्फॉर्मेशन, यू विल सिंपली सी द नंबर कि मुझे थर्ड पार्टिसिपेंट का डेटा चाहिए और द सेम नंबर इज़ ऑन योर स्केल और क्वेश्चनर. सो आप वहाँ से पिक करेंगे एंड दिस इज़ हाउ यू एंटर डेटा. और यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक ऑप्शन हो रही है वैल्यू लेबल. ये आपको इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या शो करे, जो लेबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं कि हमारा ये जो डेटा था ये लेबल्स में किस तरह आ रहा है. बट वी विल कीप इट इन द न्यूमेरिक. सो दिस इज द बेसिक डेटा एंट्री of your questionnaire, of the data of your research. And now we will discuss one by one how you will calculate the scores, how you will run analysis in the next video.